स्केच बनाएंगे। सर्कल लेते हैं 65 डायमीटर और 41.25 डायमीटर। और एक सर्कल लेंगे 50 डायमीटर और 34.9 डायमीटर। और सर्कल लेंगे 28 डायमीटर और 10 डायमीटर। सबको एक लाइन करेंगे, ये लाइन। डायमेंशन देंगे 1 सर्कल 96, इधर से दूसरा सर्कल 44। ये लाइन से सीधी लाइन, ये लाइन से सीधी लाइन ट्रिम कर देंगे। एक लाइन यहाँ पे देंगे 26 लाइन। ये लाइन को सेंटर से लाइन करेंगे, इसको डायमेंशन देंगे 32। ये लाइन से स्केच बनाएंगे, ये लाइन, इसको ट्रिम कर देंगे। यहाँ चाबी गाला बनाएंगे, में ये लाइन को सेंटर से लाइन करेंगे। इसको लेंथ देंगे 22.39। ट्रिम कर देंगे।
ये लाइन भी ट्रिम करते हैं। स्केच फिनिश करेंगे। एक्सट्रूड देते हैं। रीजन बाउंड्री कर्व, सिमेट्रिक वैल्यू 34 mm, 1 लाख। तो सिमेट्रिक वैल्यू 50 mm, 1 लाख। इसको हाइड करेंगे। स्केच बनाएंगे। सेंटर से रेक्टेंगुलर को देंगे 39 39.9 और चौड़ाई देंगे चला जाएगा 24 स्केच। एक्सट्रूड कमांड, कनेक्टेड कर्व्स, यहाँ से देते हैं until next। नीचे तक थोड़ा ऊपर लेते हैं। ओके, अभी ये पार्ट हमको इसके साथ कनेक्ट करना है, तो 2 बार एक्सट्रूड, तीसरी बार लेंगे रीजन बाउंड्री कर्व्स, इसको करते हैं। ये अंदर साइड तक खींच लेंगे। 22.5 वैल्यू हो गया। ओके, यूनाइट चेक कर लेते हैं। ये कनेक्टेड, यूनाइट हो गया। हाइड स्केच ऐड कर देंगे और एक डेंटम प्लान बनाएंगे। वैल्यू देंगे लेंथ 166 mm। ओके, स्केच लेंगे।
सेंटर में एक सर्कल बनेगा, और 24 sketch random plan height store command लेंगे, connected curves edit next apply। अभी सिंगल कर लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन सबट्रैक्ट स्केच बनाएंगे, प्लान सर्कल 28 diameter, 10 diameter, ये लाइन सेंटर से लाइन sketch finish। सेंटर में एक्सट्रूड लेंगे, यूनाइट करेंगे, पीछे से बॉडी तक लेंगे और इसका लेंथ है 36 सेंटर। इससे एक्सट्रूड लेंगे, सिंगल कर बीच वाला सर्कल सबट्रैक्ट होल आर पार हो गया, मॉडल बन गया है। एक स्केच फिर से
से लेना है। सर्कल 10 mm, फिनिश स्केच, एक्सपोर्ट, सबस्ट्रैक्ट, स्केच हाइड करेंगे, सब हाइड करेंगे। मॉडल बन गया है। कलर चेंज करते हैं। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।